we will be we will be discussing today the gynoecium. जिस तरह हमने कल एंड्रोशियम स्टेमन्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, देयर अरेंजमेंट, उनका आपस में अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट विथ अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जिसको हमने एडहीजन कहा, और दिस डे वी विल स्टडी अबाउट द gynoecium. Talking about the gynoecium, gynoecium is called the female whorl of the flower. Like androecium, gynoecium is also essential whorl of flower. It is essential in the sense that it is directly involved in reproduction. And it is the fourth and second essential whorl of the flower. It is the female part of the flower which comprises of inner whorl of megasporophyll. This is important. Megasporophyll. अगर हम इसका लिटरल मीनिंग करेंगे मेगास्पोरोफिल का, मेगास्पोर, फिल हो गया लीफ, दोज लीव्स दैट बियर मेगास्पोर्स. मेगास्पोर इज द फ्यूचर फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज दीज लीव्स जिनको ब्रॉडली हम कहते थे जिम्नास्पर्म्स तक मेगास्पोरोफिल्स. अब यहाँ पे in angiosperms megasporals have become specialized and they are called carpels. इनको कार्पल कहते हैं. And the collection of carpels is called gynoecium. What is actually the carpel? It is the megasporophyll of the pteridophytes. Pteridophytes में some leaves bear megaspores, and those leaves are called megasporophylls. And there in the pteridophytes we have microsporophylls. Microsporophylls in the angiosperms are called stamens. They have become specialized as stamens, and megasporophylls have become specialized as carpels. And these carpels are megasporophylls. They are, when we take one carpel, it has mostly the parts, that is upper part, which is the receptive part, then elongated tube-like structure, which is the style. Upper wala part is called a stigma, and the basal swollen part is called auri. And if someone asks you what the carpel is in the pteridophytes or in the gymnosperms, you should at once tell them that it is the megasporophyll. Yani that leaf which is bearing the megaspores. Megaspores later on form the female gametophyte, and in the female gametophyte, we call it as embryo sac as well. Female gametophyte को हम एंजियोस्पर्म्स में एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं. आपने 12th में पढ़ा है एम्ब्रियो सैक. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, पॉलीगोनम टाइप. एंड इन पॉलीगोनम टाइप इसमें क्या होता है, इसमें 7 सेल्स होते हैं, 8 न्यूक्लिय पॉलीगोनम टाइप में. पॉलीगोनम टाइप इज लाइक दिस. वी हैव एग apparatus where there is central egg cell surrounded by or flanked by the lateral synergids. We have the central cell where there are 2 unfused nuclei. We have the 3 antipodals. अगर आप रिकॉलेक्ट करेंगे, you remember you have read it in 12th class. इसको हम टोटल में गिनेंगे. हाउ मेनी सेल्स आर हियर? 1 2 3. सेंटर इज 4 सेल, and here 3 cells. 4 3 are 7 cells. And how many nuclei? 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 7 celled and 8 nucleate embryo sac. ये आपने 12th में पढ़ा है. उसामा पढ़ा है कि नहीं? यस सर, पढ़ा है लेकिन याद नहीं है इतना. चलो अब याद हो गया, रिविजन हो गया. वहां पे आपने मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ी है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ी है. यहाँ पे मेरे कहने का मकसद यह है कि इस कार्पल को हम मेगास्पोरोफिल कैसे कहते हैं. मेगास्पोरोफिल ये लीफ ही है. कार्पल इज ए स्पेशलाइज्ड लीफ and it bears megasporophylls. Megaspores. These megaspores here, they are enclosed. They are not naked as in gymnosperms. Gymnosperms को हम Gymnosperms are like angiosperms. They too are seed plants. Gymnosperms भी seed plants है. किन की तरह? Angiosperms की तरह. But gymnosperms and angiosperms differ. In what sense? Angiosperms में जो seeds होते हैं, they are surrounded.
they are enclosed in the ovary. So we call them as angios. Angios means vessel. Sperm means seed. Seed is enclosed in vessel-like structure called ovary. But in gymnosperms, seeds are naked. Seeds क्या होते हैं? naked. Naked मतलब they are not enclosed in ovary. अब coming to the morphology now, यहाँ पे when we talk of the gynoecium, it is the female whorl and it comprises of carpels. Carpels are actually megasporophyllus which have modified to become the carpels, and those carpels bear the ovules. Ovules are the future seeds. This one carpel, when we take of one carpel, इस कार्पल में ऊपर वाला रिसेप्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, स्टाइल एंड बेसल स्वोलन पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ओवरी. Moving further, ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube जिसको हम स्टाइल कहते हैं, and style connects the ovary to the stigma. Stigma is usually at the tip of the style and it is the receptive surface जिस पे pollen grains गिरते हैं, and those pollen grains which are recognized and are accepted. Recognition के बाद जो accept होते हैं, those pollen grains germinate. वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके उनसे पोलन ट्यूब अराइज हो जाता है. दैट पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स डाउन इनसाइड द ओवरी, एंड इन द ओवरी देयर इज द ओव्यूल, एंड इन द ओव्यूल देयर इज द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में एग सेल होता है. पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स होते हैं. वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, and thus the fertilization is effected. Fusion of egg with the male gamete is called syngamy. The other fusion, wherein the second male gamete fuses with the central cell containing two nuclei. This is called where three nuclei fuse. That is called a triple fusion. And since two fertilizations happen here, one egg is fusing one egg fuses with the one male gamete. This is one fertilization. The other male gamete fuses with the central cell where there are two nuclei. This fertilization and this fertilization, these two fertilizations become two fertilizations, and this is called the double fertilization. आया समझ? क्लास में है कोई? आप प्लीज बताइए, समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है. वो समझ सिर्फ क्लास में है, बाकी कहाँ है? बाकी नहीं है सर क्लास? हम भी. यस सर. ठीक है, अच्छा कर रहे हो. अब आपने 12th में ये भी पढ़ा होगा कि इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा है, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी एंड गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी. नो सर, zoology में पढ़ा है MH इनकॉम्पेटेबिलिटी. अच्छा, यहाँ नहीं पढ़ा है. वो तो नो इम्यून सर. सिस्टम में है. यहाँ पे आपने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ भी है इनकम्पैटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक. यानी कौन सा पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होके compatible होता है, and compatible pollen grain only germinates. Incompatible pollen grain is rejected, that does not germinate. This reaction of compatibility occurs on the stigma of this carpel. अगर हम एक कार्पल को ड्रा करेंगे, एक कार्पल को ड्रा करेंगे, in one carpel you have upper portion that is called the stigma and lower portion is called the ovary. ovary में क्या होता है? ovule. ovule में क्या होता है? embryo sac. This stigma is the palate form. Stigma क्या होता है? प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म किन के लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए. पोलन ग्रेन्स के लिए. एंड पोलन ग्रेन क्या होता है? मार्फोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नाउ पोलन ग्रेन. इट इज मेल गैमेटोफाइट. क्या होता है? मेल मेल गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट. इसमें मैक्सिमम कितने सेल्स होते हैं? 3 हैप्लॉइड सेल्स. एक होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता जनरेटिव है सेल. generative cell divided into two male gametes, two male gametes वो में. and one यस सर. vegetative cell. So in angiosperms, the gametophytes have become very much reduced.
Male gametophyte comprises maximally of 3 cells and female gametophyte consists maximally of 7 cells. लेकिन 7 cells. बहुत सारे एम्ब्रियोसैक्स है जहाँ पे 16 सेल्स भी होते हैं, अराउंड 7 सेल से ज्यादा भी, 7 सेल से कम भी, बट ओवरऑल द जनरल केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक जिसमें 7 सेल्स होते हैं. वी हैव अदर एम्ब्रियोसैक्स एज वेल, फ्रिटिलेरिया, ओनिथेरा, एंडमियन टाइप, बाइसोपोरिक, मोनोसोपोरिक. वो आपको एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ना है. This gynoecium, yani which is composed of gynoecium is group of carpels, and this gynoecium can be monocarpellary or it can be multicarpellary. Monocarpellary का मतलब हो गया when there is one carpel, and multicarpellary का मतलब हो गया when there are Many carpels. many carpels. And when the case arises that when there are many carpels, then we have other cases. Like carpels can be when there are multicarpellary gynoecium. Carpels can be, जिस तरह हम एंडोशियम में पढ़ के आए हैं, carpels can be free and carpels can be fused. And when they are fused, there can be different degrees of fusion. जिस तरह हमने एंड्रोशियम में पढ़ा, जिस तरह स्टेमन्स में different degrees of fusion. And when we are free में हमें फ्यूजन नहीं पढ़ना है. They are free and they are free. Now see, when इतना समझ आया? Yes, sir. If only one carpel, आप सिर्फ मुझे इकरार कीजिए कि ताकि मुझे पता चले you are in the class or I am audible. If one carpel is present in gynoecium, this condition is called monocarpellary. If more than one carpel is present in gynoecium, the condition is called polycarpellary or multicarpellary. If all carpels in polycarpellary or multicarpellary condition are free, the condition is called apocarpus. आप repeat करें. If all carpels are free, then the condition is called Apocarpus. apocarpus. ये थे तो याद please. If all carpels are free, the condition is called apocarpus. And if carpels are fused, then condition is called syncarpus. Apocarpus or syncarpus. Syn means fused. Fusion, syngamy जिस तरह हम पढ़ते हैं. Fusion of gametes. Carpus stands for carpel. Syncarpus हो गया fused carpels. And apocarpus हो गया Free. Free. Now, coming to second part of this topic, we have cohesion of carpel. This is important now. Cohesion of carpel, then we have adhesion as well. Coming to the cohesion of carpel, जिस तरह हमने स्टेमन्स में cohesion देखा, स्टेमन्स में आपस में फ्यूजन, इसी तरह carpels में आपस में फ्यूजन. Whether the fusion is full, whether the fusion is not full. For example, जब हम condition लेंगे in syncarpus gynoecium, two types of cohesions can be found. That is fusion among carpels, and the fusion can be of, or the cohesion can be of two types. When ovaries are fused, but stigma and style are free, separated with each other, this can be one fusion. नीचे, for example, we have two carpels. समझ आया? We have Two carpels. and the two carpels में नीचे जो ओरी है they are fused. Ovaries will be fused, but style and stigmas are free. Style और stigma क्या होंगे? Free. This two is the cohesion, this two is the fusion, but here the fusion is in ovaries only, and style and stigmas are free. For example, this condition is seen in dianthus, this condition is seen in plumbago. We have another case, ovary and style are fused, but stigma is not fused. Stigmas ऊपर जो stigmas होते हैं
फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कार्पल्स एंड टू कार्पल्स के दोनों स्टिग्मास ऊपर क्या है, दे आर B. फ्री, लेकिन उनके स्टाइल्स फ्यूज्ड है, उनके ओवरीज नीचे फ्यूज्ड है, एंड दिस टू इज ए फ्यूजन. वी हैव another case when stigma is fused but the ovary and style are free. अब इस केस में ऊपर स्टिग्मा फ्यूज्ड है लेकिन ओवरी एंड स्टाइल नीचे फ्री है. फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस में कैसिया फेस्टुला, नीरियम एक्स्ट्रा. We have another condition where carpels are completely fused. They are, the fusion is, यहाँ पर क्या है, the carpels are completely fused मतलब फ्यूजन इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कार्पल, Length of यानी कार्पल का सारा फ्यूज्ड है, कार्पल इज टोटली फ्यूज्ड. दिस कंडीशन इज फाउंड इन मैक्सिमम फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, रेडिश, टोमेटो, बहुत सारे फ्लावर्स में ये कंडीशन पाई जाती है. अटेंडेंस करिए तब तक, अटेंडेंस रोमे से अटेंडेंस कर लेना. अच्छा, now we have another topic. यहाँ shall I repeat it again? cohesion of carpel या नहीं? हम आगे जाए या इसको मैं रिपीट करूं? कोई बताए? तो चलिए आगे. ठीक है. now we have placentation. ट्यूसडे को आपका एग्जाम होगा, हाँ, एंड्रोशियम का, सारा एंड्रोशियम. Yes, sir. प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट लेट वी स्टडी व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ प्लेसेंटेशन. सी, ओव्यूल जो होते हैं दे आर अटैच्ड टू ओरी वॉल्स on one or more cushion. Those cushions are called placenta. For example, you have seen the pod, pod of pea or pod of this. Legumes. यहाँ पे क्या है, जो वो मटर के दाने होते हैं, they are attached to ovary by a stalk like structure. That जब वो मटर का दाना कट हो जाता है, trace is left on the ovary. That trace, that cushion-like structure by which it was attached to the ovary, that is called a placenta. उसको क्या कहते हैं? Placenta. जिस तरह इन द मदर्स वोम एक एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड via that placenta, same placenta is here in the ovary, wherein the ovules, developing ovules which are maturing into seeds, they are attached to ovary wall by a structure that is called a placenta, and through this placenta the growing embryo, the growing maturing seed gets nutrition and other water supply etc, and besides it is protected within the ovary till it matures. आया समझ अब प्लेसेंटा क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Now अब मसला है what is placentation. Placentation is arrangement of ovules within ovary wall. This is called placentation. What is placentation now? Arrangement of ovules within the ovary wall. इसको क्या कहते हैं? Placentation. Placentation. We have different types of placentations depending how the ovules are attached to the ovary wall. I will share whiteboard with you. You will wait for 1 minute. उसामा, हमारे पास कितना टाइम रहा? उसामा टाइम कुतर होता? Look at this diagram. इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, दैट यू विल कीप स्टेटस इसका, व्हाट इज अब स्टेटस रखिए, एंड दैट विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग इट. व्हाट इज अब स्टेटस? You will check your status so many times to
know how many people have waived your status while doing it. You will go through it, study it again and again. यहाँ पे this is one kind of placentation. This you see, ये शुद्ध रोजमर्रा जिंदगी में आप इसको देखते कि नहीं? यमन आज मटर आसन सिउन तिमो आसि सुबह उठमुत। जब हम मटर का वो पार्ट खोलते हैं, उसमें दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ये मटर के दाने हैं। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. This is another placentation. What is this kind of placentation? Axial placentation. Another is parietal placentation. Another one is precentral placentation. Another one is basal placentation. And we have superficial placentation. पहले आप you will remember the names of these placentations. ठीक है? Yes, sir. पहले आप इन placentations के क्या करेंगे? Names. Names. ठीक? कोई रिपीट करे मेरे साथ? कॉमन है यम? Yes, sir. बताओ। Marginal, axial, parietal, precentral, basal, and superficial. एक मिनट, आई विल शेयर व्हाइट बोर्ड विथ यू, और उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड आया। Yes, sir. यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल, वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। आज हम एक ही क्लास लेंगे। यह है, दिस इज द बेसल सोलन पार्ट, क्या है? आवरी। Ovary. दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। Stigma. अब इस आवरी में प्लसेंटा है। इस आवरी में, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। Ovules are Ovules. attached to ovary wall and that attachment will vary. अब हम सिर्फ ये लेंगे, जिस only ovary wall लेंगे। अब for example, this is ovary wall. We can have varied arrangement of placenta. For example, placenta will bear on the walls and ovules are born on those placentae. This will be one arrangement. This is one arrangement. We can have another arrangement. For example, this, in the center of this ovary there is some tissue, and on that tissue ovules are attached। उस टिश्यू पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं। दिस विल बी अनदर काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन। दिस इज अनदर काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन। वी कैन हैव अनदर काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन। फॉर एग्जांपल, this is this is the ovary that pod, and we have this type on the margins. We have this pattern of arrangement of these placentae. So this would be the another type of placentation. We can have another type of placentation. For example, in the ovary there are chambers, and the chambers, it is a multilocular ovary where carpels are fused, and the fusion is not true, it is a pseudo fusion, and the ovules are attached centrally, but this central tissue dissolves sooner, and this will be another type of placentation. So we have various types of placentations in the ovary. Now coming to the Ovary. definitions of these placentations, इन placentations को हम पढ़ेंगे अब एक एक करके। उसामा है क्लास में? Yes, sir. अच्छा, अगर कल आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज प्लेसेंटेशन, क्या हो गया प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। पैटर्न Ovary ऑफ ball. अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, जिस तरह हम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को फैलोटैक्सी कहते हैं,
पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा और पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स by the placenta in the ovary is called placentation. It is of following types. One is marginal placentation, second is parietal placentation, third is axial placentation, fourth is precentral placentation, and precentral placentation. We have we Basal. have we have superficial Basal. placentation, we have superficial placentation, and we have basal placentation. Now coming to these placentations one by one, हम इनको एक एक करके उठाएंगे. Marginal placentation is found in ovary which has one locule, यानी unilocular ovary, वो ovary जिसमें एक ही chamber होता है. And the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are born on this ridge, forming two rows. For example, leguminaceae में Fabaceae family जो है, जिस तरह मटर मटर बीन्स, उसमें क्या है, उसमें एक ही चैम्बर होता है ओरी में. फॉर एग्जांपल ये दिस इज मटर का वो एक पॉड, इसमें दिस इज वन चैम्बर ओनली. प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर, जहां से ये पॉड बंद होती है इसको हम खोलेंगे. जहां पे ये बंद है वहां पे दिस इज दैट इज द वेंट्रल सूचर, and on that ventral suture we have a ridge, and on that ridge the placentae are born in two rows. Uh, this type of placentation is called marginal placentation. Now we have parietal placentation. This type of placentation is found again in unilocular ovary, where the ovary is syncarpus. That is, syncarpus मतलब many carpels have fused, and उनमें जो अंदर ovary का wall है उसमें जो partitions है they have not remained there. Fusion में जो for example many carpels have fused, but the places where they have fused, but the ends where they have fused, they do not remain there. They dissolve, but and the ovule develop on the inner wall of ovary. इसको हम नए से बनाएंगे. This is the ovary, and इसका जो inner wall है, this inner wall of ovary पे there are born what? Ovules are born on the inner wall of ovary, on peripheral part. इसका जो बाहर वाला peripheral part है, ovary becomes bi or multilocular due to formation of, यहाँ पे it can become bilocular, it can become multilocular. यहाँ पे एक false septum बनता है. False septum हो गया partition, and that does not remain there, it is false. And this case is found in, for example, cucurbita, ergemone, crucifery family, mustard. जब आप वो मस्टर्ड का वो पॉड खोलेंगे उसमें एक ट्रांसपेरेंट पार्टीशन जैसा होता है, and on that transparent partition we have those ovules attached. That type is called parietal placentation. Now we have axial placentation. From the literal meaning itself, axial placentation is clear when the ovary is multicarpellary. That is, there are so many carpels. Yes, and the carpels are fused. Multicarpellary syncarpus. The carpels are fused, and the fusion margin of the carpel is grown inward and meet in the center of the ovary. यानी जहां पर ये margins fuse होते हैं, for example it is bicarpellary ovary and the margins fuse, these grow towards center. ये center की तरफ पहुंचते हैं, and in the center this forms the central portion, and on that central portion ovules are born on this central axis. When ovules are born on this central axis, this type of placentation is called axial placentation. That is, ovules are born on the central axis. Number of these chambers is equal to number of carpels. How many chambers would be there in this ovary? That is a multicarpellary syncarpus ovary.
those number of chambers will decide how many carpels have fused. For example, this is seen in potato, China rose, onion, lemon, orange, tomato. Orange का season ही आज चल रहा है. You open the ovary of the this orange and see how these ovules are born. या टमाटो आप खोलेंगे, टमाटो में वो ovules on the central axis होते हैं attach. यानी जो ovules आज टमाटो में seeds की सूरत में है, because ovules later on ripen to become the seeds. We have now another type which is called free central. अगर हम free central को ऐसे ही लेंगे word meaning, free central में क्या है? This type of placentation is found in syncarpal gynoecium. ये भी किस gynoecium में होता है? Syncarpus. Syncarpus मतलब when there are so many carpels and the carpels have fused in it, इसमें क्या होता है? Ovary is unilocular. वो जो fusion है that has dissolved, that is the tissue of the fusion has not remained there, and there is now only one chamber in the ovary, and the ovules are born on the axis in the center of ovary. Ovules होते हैं on the axis in the center of ovary. ovary के center में एक axis होती है, and septum यहाँ पे it is absent. जबकि axial placentation में septum बराबर रहते हैं. यहाँ पे septum they are dissolved. किसमें? Free central में septum are dissolved. So this free central placentation first starts from axial placentation, and later on when the septa are dissolved it becomes free central. After some time the walls of the ovary destroy and only ओवल्यूटेड एक्सिस remains there. सिर्फ वहां पे एक एक्सिस का पोर्शन रहता है जिस पर